Good morning, students. Today we are going to start a next exercise. The topic is profit and loss percentage. Now, in a previous exercise, we already discussed about the profit and loss only, but in that we will find the percentage also. Now, why we will find that the profit and loss percentage? From example, it will be clear. Suppose a shopkeeper buy an article for rupees 100 and sell it for rupees 120. Now in that CP is less than from SP, that means this SP is greater than from this much, that means the shopkeeper make a profit. How much rupees? That is rupees 20. Now one more, that if another shopkeeper buy the same article for rupees 80 and sell it for rupees 100, now he too make a profit again. SP is greater than from CP, again he makes a profit of rupees 20. Now in that it's not easy to compare both, because in both examples CP and SP is different. Did you understand? Now in the first, shopkeeper made a profit of rupees 20 when he invest rupees 100, but the second one, shopkeeper made a profit of rupees 20 when he invested 80 रुपीज़. ठीक है, सो वी कैन नॉट कंपेयर देयर प्रॉफिट डायरेक्टली. हम इससे डायरेक्ट उनका प्रॉफिट कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज द CP ऑफ दैट बोथ आर्टिकल्स आर डिफरेंट. सो इट्स नॉट ईजी टू फाइंड द प्रॉफिट डायरेक्टली, सो वी विल फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. We can make a correct comparison only if we have the profit for their सेम कॉस्ट प्राइस. वही बात, अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता देन इट्स इजी टू फाइंड द प्रॉफिट डायरेक्ट, बट इन दैट द CP is different, so we will find, that's why we calculate the profit percentage and same as the true for the loss percentage also. Now how to find the profit percentage and loss percentage? Firstly, loss percentage, how we will find? That is equal to profit divided by CP into 100. That is the formula to use the how to find the profit. That is equal to profit divided by CP into 100. Profit, we all know how to find the profit. That is equal to SP minus CP divided by CP into 100. Did you understand? Now similarly, how to find the loss percentage? That is equal to loss divided by CP into 100, and loss, that is equal to CP minus SP. One more thing, that note, remember that the profit or the loss is always calculated on cost price. Now let's come to the first example. A shopkeeper bought a clock for rupees 1200 and sold it for rupees 1440 rupees, and find the profit and loss percentage. So how we will find that the shopkeeper make a profit or loss percentage? Firstly, we will find the profit or loss. Now in that, CP is this one and SP is this one. Now SP is greater than from CP, that means the shopkeeper make a profit. Did you understand how to find? We already know how to find the profit and loss. In previous exercise we already done. Now in that, SP is greater than from CP, that means the shopkeeper make a profit. Profit हुआ है, firstly we will find the profit. How we will find that profit? That is equal to SP minus CP, that is equal to this much. ठीक है, now अगर प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स ये अब हमें क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100. नाउ प्रॉफिट कितना है? 240 डिवाइड बाय CP कितना है? दिस मच इंटू 100. नाउ अगेन वी विल कट इट लाइक दिस, दिस इज ऑन 20. ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू 20. दैट मीन्स दी शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%. Percentage, we will put this sign here. Did you understand? Now let's come to the next example. Sania bought a silk dress for rupees 850 and sold it for rupees 765. Find her profit or loss percentage. Firstly, we will see that the Sania make a profit or loss. Now in that, CP is this one and SP is this one. Now in that, CP is greater than from SP. ठीक है, that means the Sania makes a profit, loss. Now how we will find the loss? That is equal to cost price minus selling price, that is equal to this much rupees. Now we will find the
परसेंटेज दैट इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है, लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द लॉस CP and into 100 as it is. Now again we will cut it, that is on a 1. मतलब कितना परसेंटेज लॉस हुआ उसको, 10. दैट मीन्स ये सानिया लॉस इज 10%. Did you understand? Now let's come to the third example. A man buys some clothes for rupees 4200. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एट वट प्राइस शुड ही सेल देम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15%. नाउ इन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉथ्स इज गिवन एंड बताया कि उसने, हमें फाइंड क्या करना है कि उसने कितने में बेचा कि उसे इतने % प्रॉफिट हो गया. अब हमें परसेंटेज में प्रॉफिट पता है कि कितना हो रहा है, बट वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट मनी. सो हाउ वी विल फाइंड दैट द profit? Let's start. Now example third, first part, cost price that is equal to 4200, ठीक है, and profit percentage is given that is equal to 15%. Now the profit is given in a percentage. For selling price we will find the profit. How we will find the profit, मतलब कितने रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में पता है, बट प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 15 पर जितने % का प्रॉफिट बता रहे हैं ऑफ CP. नाउ हाउ वी विल राइट दिस वन, दैट इज अ 15 डिवाइड बाय 100 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, CP कितना है 4200. नाउ अगेन वी विल कट इट एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैट 630, मतलब कितना प्रॉफिट है उसे हो रहा है 630. नाउ हाउ टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, नाउ इन दैट कॉस्ट प्राइस इज गिवन एंड प्रॉफिट इज गिवन. नाउ हाउ टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू CP इज 4200 प्लस 630, दैट इज इक्वल टू 4830 रुपीज़. मतलब कि उसने फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि उसने इतने में बेचा कि उसको इतने % का प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट जब परसेंटेज में गिवन हो और वैसे फाइंड करना हो, दैट हाउ वी विल फाइंड, दैट इज अ जितना प्रॉफिट बताया ऑफ CP. ठीक है. नाउ इन अ नेक्स्ट पार्ट उन्होंने बोला है इफ ही सफर अ लॉस ऑफ 15% देन फाइंड द सेलिंग प्राइस. अब इसमें उल्टा है कि उसको अगर वो इतने % उसका लॉस हुआ है देन सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेम कैसे होगा, देखो इन सेकेंड पार्ट अगेन सेम एज इट इज, CP 4200 एंड लॉस 15%. नाउ हाउ वी विल फाइंड द लॉस, मतलब कितने पैसे का लॉस हुआ है, हाउ वी विल फाइंड, दैट इज इक्वल टू जितने % का लॉस ऑफ CP, वो सेम कितना आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेट 630. ठीक है. नाउ अब CP गिवन है और लॉस गिवन है, हाउ वी विल फाइंड द SP, दैट इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, 4200 माइनस 630, that is equal to 7 5 sorry 43570. मतलब कि उसने इतने में शर्ट जो कपड़े हैं उसको बेचा होगा तभी उसे 15% का लॉस हो रहा. Did you understand how to do? Now next example, a dealer makes a profit of ₹50 by selling a commodity for ₹450. Find his profit percentage. Now in that profit given and selling price given. So firstly we will find the CP. How we will find, that is equal to SP minus profit. मतलब that is equal to 400. CP of that cost is CP of that thing is a 400. Now how to find the profit percentage? Profit divided by CP into 100. Profit is 50 divided by 400 into 100. After cut it and what we will get, 50 by 4. And we will write that in a mixed fraction. Now here we will put the percentage also. Next is also same. A shopkeeper incurs a loss of ₹20 by selling a vase
at rupees 380, find his loss percentage. Now in that, loss is given and selling price is given. Cost price that is equal to, जब loss और selling price given हो, that how we will find the cost price, that is equal to selling price plus loss. That means how much cost price of that vase is rupees 400. Now how to find the loss percentage, that is equal to loss divided by CP into 100. After cut it, and what we will get, 5%. That means the loss कितना हुआ, 5%. Now you have to solve exercise sum 1 to 7, sum up to 7 sum. You have to solve on your fair copy.